the images horizontally and then invert it. What does inverted mean? Invert means 0 to 1. फिर नहीं आएगा क्या ये? Yeah. Click on invert the images. Invert to the images meant 0 to 1 replaced by each one, replaced by 1. So how is this thing working? Flip is like reversing, I guess. We are not reversing. Oh, we have to reverse. Okay, if it is 0, then we have to invert to 1. And if it is 1, then we have to invert to the 0. And for the first process, we have to first reverse everything. We have to take the result, right? Should we do this thing in place or something? Now we have to reverse. First, we have to reverse. Every row we have to reverse, right?
It doesn't matter, right? Like when you're going to inverse and reverse, it's going to be the same. Like nothing is going to change. But here we are replacing every value, I guess. वैसे ये रिवर्स शॉर्ट कैसे हो गया? शॉर्ट तो नहीं होना चाहिए। First I have to reverse, man. If I'm not reversing, then I won't get the answer, I guess. तो रिवर्स लेंगे तो फिर अपने पास क्या आएगा? बस इमेज ऑफ जे आएगा, आई गेस। इमेज ऑफ जे में we can use dot reverse, I guess. डॉट रिवर्स करने के बाद में इन्वर्स करनी है। इन्वर्स करने के बाद में वी हैव टू स्टोर द वैल्यू, राइट? अब अब मैं रिवर्स पे एक लूप लगाऊं फिर? ना ब्रो। बस हाय आदेश। ये म्यूजिक सुन के मेरे को नींद आ रही है। अच्छा गाना नहीं है क्या? मतलब सुनने से अच्छा लगेगा भाई, नींद नहीं आना चाहिए। 12 o'clock तक करनी है आज। 3 million views के। ये 3 घंटा मतलब बात क्या है इसने? मतलब म्यूजिक है। इज ऑडियो। है? ये क्या बोल रहा है? क्या कर लिया भाई तूने? वैसे मेरे पास रो यहाँ पे आ जाएगा ना? रो यहाँ पे आएगा तो अलग अलग रो का ही करनी है। रो को करनी है तो फिर आई थिंक ये ऊपर में आएगा बस। व्हाट द फक ब्रो। एक एक रो रहेगा अपने पास में, रो रहेगा एंड देन लाइक वी प्लेड द लीड कोड ऑन योर स्ट्रीम अनले। मतलब पता है मेरा मेरा सिस्टम पूरा वो हैंग कर गया। रिस्टार्ट कर दिया था मैंने। कंट्रोल और डिल दबा के। रो ऑफ करनी है ना? रो ऑफ डॉट रिवर्स करेंगे तो शायद हो जाना चाहिए। पहले मैं पहले इसको निकालता हूँ। पहले इसको निकाल के पहले ट्राई करना है, फिर डू दिस। कंपाइलर। 2D अरे समझने में इतना दिक्कत क्यों हो रही है भाई यार? कॉलम रो ही तो है। और मैट डॉट लेंथ किया, आई प्लस प्लस कर यार। फिर क्या आएगा? मेरे कंसोल डॉट लॉक करूंगा। मैट ऑफ आई किया तो हर एक रो आना चाहिए अगर बराबर हो तो।
इफ आई इक्वल इक्वल्स टू 1 किया एंड फिर तब मैं कंसोल डॉट लॉग किया मैट ऑफ आई किया, ब्रेक मार दिया, तो मेरे को ये आना चाहिए 101। बराबर आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको? लेट रिवर्स विल बी लाइक, पहले रिवर्स करेंगे इसको, रिवर्स करने के बाद में रिवर्स के ऊपर में हम चलाएंगे, लूप चलाने के बाद में उसको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करके उसको रिजल्ट में डालेंगे। तो लेट रिजल्ट विल बी लाइक this thing, and my reverse should be having mat of I dot reverse। हर एक मैट के लिए अपने पास अभी जाएगा ये, हर एक मैट के लिए let j equals to my I, and j goes till what, reverse of I guess। reverse of I काम करेगा क्या? No idea। j plus plus, and if I console log my should I console log my reverse of I or like matrix of I right now? रिवर्स ऑफ जे कंसोल लॉक करते हैं यहाँ पे। Nothing shown up। It should be zero, bro। If I'm doing reverse of I करेंगे तो ये रहना चाहिए guess। तो इसमें इशू कहाँ पे हो रही है? रिवर्स ऑफ ये करेंगे तो पहले कंसोल लॉक करता हूँ इसको। रिवर्स करेंगे तो इट शुड बी लाइक, ये पूरा रिवर्स हो जाना चाहिए, पूरा रिवर्स होना चाहिए। सो 1 विल बी हियर एंड 1, 0 विल बी हियर एंड 1 विल बी हियर। हो रहा है, 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 हो रहा है। तो रिवर्स पर लूप क्यों नहीं रह रही है? लाइक व्हाट द फक। मान ले मैं लेट जे ले लूंगा, जे ले 0 एंड while j is less than my reverse dot length, reverse of I dot length कर दिया। if my अच्छा, if my reverse of I, so it should be reverse of j equals to 0, then make reverse of j equals to 1, else if what do you do, what do you do, what do you do, what do you do? मतलब मेरे को रिजल्ट चाहिए ही नहीं है ऐसे, इसी को कर देंगे रिवर्स। इसको रिवर्स करके इसमें असाइन कर देंगे आई गेस। else if my reverse of j equals, j आएगा भाई, equals to 1, reverse of j will be 0। Oh my god, will this work or not, man? Like what the fuck, bro? Console load of mat करेंगे तो we are having the mat, रिवर्स हो रहा है। Instead of storing inside my reverse, I think I need to store back in the mat itself, I guess। Like reverse में डाल रहा है and then I'm not assigning back to the mat, right? The mat में आएगा नहीं, I guess। That could be, that could cause some problems। For every row you're going to reverse and going to take a pointer, and after doing this shit, it doesn't matter, I guess। J plus plus log one, and eventually it will reach this thing here and it will break out of the loop, and we will have the reverse thing whatever we needed। And do we need a result thing, or like can we just change this itself? Resources to learn DSA, I learned from Googling and watch a lot of videos, man। I can't suggest you a single resource।
I don't know for the other languages, but for the JavaScript, I don't think there are a lot of resources for DSA. But if you're looking for C++, then I think you should look for the Strivers DSA sheet. And if you're looking for Java, then you can look at the Kunal Kushwa. For the Python, I don't know, man. Like Python, I don't have much idea about the Python. Every time if I do this, let me run first. We are not getting what we are supposed to get, right? I think it got reversed, but I feel like it got reversed. It got reversed, right? Yeah, it got reversed. Yeah, 101 is supposed to be 101 after reversal, and 0 is supposed to be 0. This is working. But the changing thing did not work, man. Like, what the fuck? Videos. I don't know. Like, I'm not a book person, so I haven't read much books. Maybe you can check this, like, roadmap.sh, I guess. You can check this one. So my reversal is not working. I mean, like, my inversion is not working. So what could be the possibility here? Like on the zeroth index, I'm trying to change. If it is zero, then I'm going to change it back to the one here, but it's not working, I guess. I'm not from Kerala. Reverse of I, bro. What the fuck, bro? J equals to zero. Will start from zero, and it will go till end of my reverse of I dot length, and after that we are checking if reverse of j is equals to zero. Then we are going to assign one to it, and otherwise we are going to check if it is one. Then we are going to assign zero. Now I live in the South India, but I'm not South Indian. There won't be any cases like where we won't be getting any values. Like since we have zeros and ones here, like they have told us like image of I and j can only contain zero or one. There couldn't be any exceptional cases, I guess. So we don't have to check for the difference. But here right now, what is the problem then? Like we have the j and we have the reverse of I dot length. And if reverse of j equals to zero, let me print here. Okay, this is not working. Even that part was not working. Like I was trying to get the j will be like zero and j will go till end of my reverse of I dot length, and this loop didn't work for me, I guess. And if my reverse of j equals to zero, then you're going to ascend back the reverse of j equals to one. Otherwise, we are going to check if it is the reverse of j equals to one, then we're going to assign zero there. Even this shit didn't work. How does this reverse is working? Like, so we don't have to set back to the mat, I guess. So this is working fine. We don't have to set back this thing back to the mat. And this is where we're just storing the value. We're not doing anything.
And for this part, I don't know why the fuck this is not working. I just need to invert them, bro. What the fuck, bro? Why it's so hard? I just need to make the zeros as one and one as zeros. So my reverse of I is not working. I want to do the inversion on the reverser, so I think I should use this thing. I don't understand where is the problem here. If I do reverse, then it will. I think if I do reverse normally, then I think it will be changing this position to this position here. So I think that would be a wrong answer. So I guess we have to do the reversal in inside only. So but I don't know why inversion part is not working. Like should I give the I index as well? No, this is not working. Did anyone understood the question? Like we had to reverse and invert it back. I don't know why the fuck this is not working, man. This does not have the problem number, I guess. This is from the mock test. You can't get the problem number. There's no problem number. I just need to invert back, bro. I have already done the half part. I just need to invert. I'm just trying to get the reverse of the row here, and after that, I'm just iterating over it. And I'm trying to change back that thing to zero. If it is zero, then I'm going to store back one. No, it doesn't. It does not have any number, bro. There are no number, nothing is there. There is no problem name, nothing. You won't have anything. This is mock test. Since I have my reverse will have my mat of I of reverse, and I'm going to iterate on this. Then I'll have reverse of j, which is going to contain the element, right? It won't have the double index, I guess. Then why even this thing is not working? It can't have I. What's the problem with the loop, though? I think I'm looping it wrong somewhere. I guess I need to loop it somewhere else. I'm just doing something wrong. Hey, we already have the reverse here, but why the fuck I'm doing the same thing again? Like I'm doing the reverse of I again. Like are we good to go? I guess we are good to go. I guess we are good to go. I think this is the answer. Let me try. So I'm going to take this thing there. I'm going to do the
What is the issue here? I have an extra bracket. Oh, wait. Okay. Now I have to return my matrix again. Matrix is going to be image. Okay, I don't even have a matrix here since I'm going to change this thing to matrix. So it's taking a lot of time, bro. I think we're good to go. Have we solved the question or what? It's taking a lot of time. I guess we have. Oh, it got solved. Damn, bro. Okay, there is a tree question here. Like, consider all the leaf of binary tree from left to right. Order of value those leaves 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 is leaf or like leaves is like going from there. Leaves form a leaf value sequence. For example, given tree above the leaf value sequence is 6, 7, 4, 9, 8. What is the sequence? What does the sequence means? How do you even get the sequence? Consider all the leaves of binary tree from left to right order. Left to right, we have a lot of iterations, I guess. Like for pre-order, we have the root left, right. Post order, post order, uh, left, right, root, I guess. In order, left, root, right. So what is working here? He's saying like consider all the leaves from the binary tree from left order to right order and values of what the fuck is this? And values of those leaves uh, form a leaf value sequence 3, 5, 1, 6, 2, 9, 8, 7, 4. For example, in the given tree, the leaf value sequence is this. Or you may not have to take the leaf values of left. What is that? From the left, which is going to be like 6, 7, 4, 9, 8. So I need to take care of all the left leaf values, which is not going to be the root. And like how do I say that? But if you're considering that thing, then it should be leaf of the root node, right? Then 5 should be the leaf node of left side, I guess. And 1 should be root, I mean, the 1 should be the leaf node of 3, which is right side. And same goes for this thing. Like you can have the leaf node as this one here, 6, and you can even have the 2 as leaf node. I don't know how the hell are they doing this thing. Two binary trees are considered a leaf similar if their leaves values are sequence of same. How do you think this is same with? I mean, like, how do you think this is same? This is not same. Two binary trees are considered leaf similar if their leaf value sequence is same. Return true if and only if two region trees with the head node root one and root. I mean, like leaf similar or leaf similar. We have to find the sequence of the leaves and check if both have the same leaf node. But even though how it is same, like
I can't understand. Do we have to check the value or we have to check something different? Am I tripping right now? What the fuck is this? If they are in the same level, then we have to consider them as an leaf similar. That is what you're trying to say? The output is only true. I don't even need to return any value or something. I just need to find if it is equal or not. Okay. This shouldn't be that hard, I guess. Let us try. First, you need to understand the question, I guess. Here the output seems to be like 35167 and 42. Do you have to rearrange them? I feel like they have rearranged everything. Oh, sorry. We have two things, right? I forgot that's it. My bad. I was trying to check this thing with this. Like I was trying. Oh, what the fuck? Did they rearrange this thing? So for the root one, false. It can go till 200. Both of the given trees. I'll be back after having my dinner, man. You guys carry on, do something until then. Like I'll have my dinner soon today, so I can sit for longer hours. Be right back after 10 minutes. I'll have the dinner faster today, so I can sit long.
Yeah, where did we go? Oh shit, 2 minutes left. Okay. We need to check for the root dot left dot value, right? Let's take maybe function traverse. We'll have root one and again I'm doing the same thing. Why do I need a function back again then? If my root dot one, uh, if my root is not equals to null and my root two is not equals to null, then we are going to continue. I think if it is equal, then we have to return, right? What the fuck I'm doing? Yeah, binary tree, I guess. So if it is not, then what we need to do? We need to check for the left and right, left. Root one dot left, I guess. Oh, we have left right for the left one and right left for the right one and left right for the right one. We need to check for four conditions then. Like, damn, bro. Shit. It should be left, right. I'm going to get confused a lot right now. If it is left, right, then how will we check? Shit. How do I check that? M- I know like how do I need to check for the left? Oh, okay, maybe I need to. Oh yeah. If it is right, then I need to check for the right. Fuck, bro. And right, left. Oh, the names are getting crazier. And this is for the root. Maybe I can keep a simple name like R right, R left, R right. Uh, fuck, bro. Both were easy. Hmm. Oh, it's raining. Wow, it's raining here. It smells so good, man. Like what the fuck, bro? If root equals to null, should I do and or should I do or? I think either one. Return null. Otherwise, we need to check for the other condition, which is going to be like let my R1 left will be like root one not left, and let R1 right will be like root one not right. Let R2 left will be like root two dot left. Let R2 right equals to root dot right. So we have all the four things we needed for that. Left and right, left and right, left and right. Now what we need to do is like we need to take the values from there. How do you do this? Do I need a different function for that, or can I use only single function here? Since we already have this thing, we are going to do the same thing again, inside back again.
How are they comparing this thing? We do three, I mean, root dot left dot val. If it is existing, then okay. Otherwise, we are not going to check, right? So we need to check for, but we don't even have a right side here. So they are considering this thing or not? They are not considering this thing. I mean, they are considering. Oh, you should have shown me the output, man. Like, what the fuck, bro? 69867474998. Ooh. I think I got the pattern. 66747498982332. This is not true. This is false. And 6. But here we're not even having the matching values. Like, how the fuck this is working then? Like, so this is false. Return true. This is for example, I guess. So whenever my left value is equals to my right value, then only we have to make it true, I guess. We try these similar. I think I made some mistake. Let us get back to the blackboard. We do this. First, I will have an iterate function which will take iterate function will take R1, R2. And until this is until this is not null, until then we are going to go right. If condition will be like checking this thing. And should I directly take an variable and store the left, or should I do like this? Maybe I need to iterate like this otherwise. Since we have the iterate function, right? I'll iterate on what? I'll iterate on R1 right and R1 left here first. And for the next one, which will be like right one. Or maybe I can do like this. If I'm doing left for the left one, then I can do R2 dot left. And same goes for the R1 dot right and R2 dot right. And if these values matches and ends at the end, then this is going to be true, I guess. Otherwise, it can't be true. What do you think? Will that work or not?
For that, we have already took the root right and left right, so we can do like this, I guess. But wait a minute. Yeah, I think instead of storing it here, you can I do like this? Can I pass the R1L? Will it take a root left or what? I don't know, man. Like, will this thing work or not first? But still, here we are not comparing any values, I guess. Like, this is not going to work. If I am going through this, then I need to compare if this R1 dot value is equals to my R2 dot this thing. Even doing this thing will not work. So let us first iterate. Now this should be my R1 R1 right and R2 right, I guess. And here we need to do the comparison, I guess. How do we check that? If my R1 dot value, if my R1 L dot value equals to my R2 dot R2 dot R2 shade R2 L dot val and my R1 R dot val equals to my R2 R dot val, then only this is going to be the true, right? Until it goes till the end. Should I give a flag? But since this is going to be a recursion condition, I think it will fail, I guess. Like, let me take a flag. Instead of returning true here, we're going to store that thing in there. So let us keep this thing as false and we can just return the flag, I guess. Will this thing really work or not first? Do I need to call the recursion function again back here? Can I do it inside the function or like do I need to go out here? I never did with a single function, man. Like, should I call like this? I don't think it will work like this. Maybe let me try this. If we're getting TLE, then we can figure out what we can do later. I think we're getting TLE. Okay, there is a naming issue somewhere. Come on, man. It says R1 dot cannot read R1. Nah, bro. Why for real? I'm just doing this thing. So are you saying like I need to check for like either the root one dot right or dot right everything under this condition here instead of checking for this two somehow? So you want me to do this?
If this condition is true, then you're going to return. Otherwise, we are going to check for the values, which is going to be this and that. Whoa, shit, bro. We cracked it. Oh, fuck, bro. What the fuck? Oh, no, 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 no. I, I just wanted to copy the test case. I think the flag is issue here right now. Like, how do we return the flag now? If this is not true, then it is going to return true. How true? I mean, like, it is not equal. It's no fucking equal to this. I know this approach is wrong, but still working since because of some sort of returning true and false. But it shouldn't be a fluke, I guess, since we're comparing the values here. Write something for the finding the leaf sequence. Is this right or not? I mean, like, this is a wrong way of doing this thing. Or are we in the right direction first? But this music is making me sleep. How 60 million people are hearing this shit? Literally shouting in my room. Because of the loud music, I'm feeling like I'm speaking too low. It's fucking crazy. Music's here. Chaos locking. Yeah, I need to reduce the volume of this. Can you tell me what is the issue here? If if it has only one value, then I think we need to return false, I guess. We can't check the length of tree, right? It's not possible. So how do we do this? No, I mean like how do we do this? Like I can't check the length of root. There's no length property in root, right? I mean like in the trees. It can only have the left, right, and what else we have? Left, right, and value. That's it. We don't have anything else. How do we handle this thing? If my root value is like literally what the fuck, bro? Is this because of the flag? If I make it true, then I think the false one will fail, I guess. Ah, there we go, man. We don't have we don't have any answers, I guess. We don't have any answers yet. Like this is because of some fluke. Yo, you popped on my feed. Yeah. Sorry, man. I didn't mean to pop. Traverse on the left and right recursively until there is no node left. Yeah, I'm doing that. I'm doing that. See, I'm doing that. Am I not doing that? But how do we handle this one? Like, if we have only one root value and in the both side, then how we can handle that thing? Am I not doing that thing? I'm doing that thing. The fuck? Well, we are doing recursively. Look at this. Even I have to do it here.
So if I do this, will it not work like this, or like should I directly call the root one dot left here? Are you saying that? Which year? I'm not in any year, man. Not the traversal for the nodes recursively. Oh shit, bro. What the fuck I'm doing wrong? Do I need a loop? For recursion, we only need to call the function, right? Which is going to repeat until my what do you call this thing? Base condition get failed, right? The fuck? So you're saying like, oh, do you want me to call the function again back here, like this one? But since I'm returning the flag here directly, I think it will do. After return, the program stops. Oh, you're on arrays. Good luck, buddy. Arrays are going to be fun for you. So you're saying like I need to do this thing inside the traversal function instead of doing it outside here? I can't make this. I can't make this checks here since this is going to be a function. We can only pass the parameters, I guess. Can I do like this? If r1.l exists, then only you do this. Or should I not store the value like this? I feel like we don't have the answers yet. I don't know how the fuck this is working then. Like, since we are trying to compare the values exactly same, this is never going to be same, I guess. Since when you're reaching this part, you would be somewhere else in the here. You won't be having the same values. So I feel like this is not the right answer, I guess. Maybe I need to learn more. No, bro, I'm not following anything. This is supposed to be an easy question, bro. What the I feel like we need to do the level order traversal, I guess. Since we are checking for every levels, right? We are not checking for the left and right. Fuck is this working? Maybe we can take a variable somewhere and store the value, I guess. Like after that, we can make the comparison by running through each elements inside them.
Why this question is so fucking crazy for me right now? Instead of checking each one of them, I need to group them, I guess. Did you finish this driver sheet? I got placed in the TCS highest package around 65 and wow, congratulations, man. But I need to join after passing out. Okay. Uh, yeah, don't forget to give me the treat. You have promised me a burger with oh fuck, bro. A burger and Coke. You told me you're going to give. No, like there is a sheet by Striver which you can prepare for DSA rounds. Oh, issue. You going now? Let us take the left and right, I guess. Yo, what's up? No, I had a lot of doubt regarding this thing since we are going to take the same thing even inside. Why do you even need the next function? I was thinking, but I was wrong. Maybe we need another function to get the level right. What the hell happened? Hello, Tejas bhai. What's up? नोट गेट करेंगे क्या नाम रखें इसका Yeah, sure, man. If my notes are empty, then I need to return right now. Now I think it should work. Maybe I was doing something wrong, I guess. Because you have the node, and as you said, right, we need to check for the node dot left if it exists and node dot right. If this is true, then we are going to push it inside the leaf, right? Which is going to be level dot leaf. हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुआ था. मीको क्या होता है? मीको इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? मीकोस इंस्ट्रूमेंट. What is this? से अपने पास में लेफ्ट एंड राइट आ जाएगा. उसके बाद में क्या करना है? पहले अपने को लेफ्ट एंड राइट निकाल लिया है. तो इसको कॉल करते हैं लेफ्ट एंड राइट पे.
भाई ऊपर में लेवल मिल जाएगा, लेवल मिलने के बाद में ये अंदर का सीन है, बाहर में क्या होगा, बाहर में भी आइटरेट होगा ना ये, फंक्शन को बाहर में कॉल करना पड़ेगा। बट अपने पास ना ये ऊपर में जो L1 L2 लिया ना हम लोग ने, इसको यूज ही नहीं किया, उसको वैल्यू भी तो स्टोर करना पड़ेगा इसके अंदर में अपने को। हाउ डू यू डू दैट नाउ? एक सेकेंड यार, यहाँ पे कॉल कर दे ना, हम लोग ने उसको स्टोर करने के लिए यूज किया है, तो फिर रूट वन और L1 को पास कर देंगे। ये कैसा आ रहा भाई यार, फिक्स करो भाई, क्या है यार अजीब सा। अच्छा ये अंदर चला जाके, L1 L2 को वहाँ पर डालने के बाद में ना अपने पास में चेक करनी है क्या अपना, L1 और L2 सेम लेंथ पे है, अगर सेम लेंथ पे नहीं है तो फिर रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, वरना फिर एक एक करके वैल्यू चेक करेंगे आइटरेट करके, रिटर्न ट्रू उसके बाद में, व्हाट डू यू से? You can't hear songs. I won't play. I'm already facing some copyright from the Alan Walker. I don't want other copyright to be coming on my head. यहाँ देख, no impact लिखा, but still it will matter a lot. I had like 4 to 5 songs here, but कुछ कुछ करके निकाल दिया शायद, एक ही बार में से होते ही नहीं है, इसलिए मैं ऑडियो चालू नहीं करता भाई। हाँ ब्रो, ना आई कांट रिस्क। नहीं है तो फॉल्स कर देंगे, और ना फिर ट्रू करनी है, लास्ट में ट्रू आएगा। मेरे को ट्रेवल, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं यार, जिगजैग ट्रेवर्सल बोलते हैं शायद इसको, वही हो रहा है यहाँ पे देख, सारे लेवल बाय लेवल हो रहे हैं यहाँ पे, ये एक लेवल पे है एंड उसके बाद ये एक लेवल पे है, तो सारे यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो हम लोग ने 2 लेवल लिया है, सिंस वी हैव 2 रूट, अगर तीसरा और होता तो फिर तीसरा एक बन जाता है, एक L3 करके। ये काम करना चाहिए, नहीं काम किया पता नहीं। L1 का लेंथ L2 का लेंथ अगर नॉट इक्वल से देन इट विल रिटर्न, अदरवाइज एंड यहाँ पे लेवल तो सेव कर ही रहे हैं, लेवल के अंदर ही कुछ कर रहे हैं ना, वह ये काम करेगा भाई। ये लेट्स गो। वैसे ये वैसे ये मेथड क्यों काम नहीं करेगा, लाइक लेट मी आस्क AI।
आई थिंक सबको ग्रुप में करना था, मैंने डायरेक्टली एक एक करके कर रहा ना, इसलिए नहीं करा। या ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से नहीं होगा। ओह इट शुड बी एंड, ओह माय गॉड। We have a next function? No, bro, I never knew this shit. We have a next function. लेवल ऑर्डर ट्रावर्सली कर सकते हैं guys। इसका कोई और अप्रोच नहीं है क्या? मैंने रूट वाला चेक, अच्छा मैंने रूट वाला चेक कर रखा। कोई और अप्रोच ना करो भाई। टॉप टू डाउन, बॉटम टू डाउन, बॉटम टू टॉप, ऐसे बहुत सारे अप्रोच होते हैं। वो सब भी सीखना है भाई, बताओ यार। तो इसने कुछ और किया शायद। हाँ यार, कनकाट किया है ये, क्या है भाई? अजीब ही सोल्यूशन है ये तो। ये कैसे काम कर रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से के? डीएफएस लिया आपके, डीएफएस इज लेवल ऑर्डर सर। No, BFS is level order traversal. Level order traversal is BFS. Okay. So DFS is like, okay, okay, okay. सारे सारे नोड पे जाओ। और दिस इज नॉट लेवल ऑर्डर। बट यहाँ पे तो लेवल बाय लेवल ही कर रहे हैं हम लोग। इसका हिंट क्या दिया है? और डीएफएस लगाना था। दो क्वेश्चन किया है। ये व्हाट द फक। दो क्वेश्चन किए। ये बोल रहा है क्या? मैं हर टाइम मतलब जो खत्म कर लेता हूँ ना, तब मैं जो पुराना अप्रोच था ना, वो काम क्यों नहीं कर रहा, मैं ढूंढ पूछता हूँ मैं ये इससे। रॉन्ग विद दैट। इसको कोई और अप्रोच में कर नहीं सकते क्या? मेरे को टॉप टू डाउन बॉटम टू अप वाला चाहिए। ये सब नींद आ जाएगा भाई मेरे को, ये सब गाना सुन के नींद आता है। थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। हर एक लेवल के डेप्थ में जाके चेक करना होता है बस। ओह दिस इज सेम ब्रो, बट ही वाज यूजिंग सम कंकाट, व्हाट द फक। अच्छा लीव्स दोनों एक ही में कर दिया इसने। मुझे कहाँ से आ ही नहीं सकता है।
नहीं आ सकता म्यूजिक। पास आने की वजह से मेरा वो हेडफोन में से आ रहे हैं बस। गया भाई, फिर से कॉपीराइट आ लग गया मेरे। गया भाई, मेरा स्ट्रीम गया आज भी लॉल। मैं इसलिए माइक मतलब आस पास में आके मतलब बात नहीं करता। कहाँ आवाज आ रहा है भाई, पागल बना रहा है। भाई कहाँ आवाज आ रहा है? सॉल्व 1781 क्या है? व्हाट इज दिस ब्रो? ब्रो व्हाट द फक? दूर से बात कर लेता हूँ, मेरे को डर लग रहा है। और इसको सबमिट करना है। क्या है यार ये? मेरे को ट्री सब रिवाइज करना पड़ेगा भाई। I've already solved it, I guess. I think beauty string का कुछ definition दिया होगा, तो मैं उसको follow करेगा, then you will be able to solve it, I guess. There is some definition for that. Beauty string is going to be like क्या क्या definition है यहाँ पे? ये इसको होवर करने पे मिला था भाई, what the fuck भाई। मैंने brute force ही कर रखा है। Two loops, third loop. This is वो n cubes solution, but this is not optimized one. कब किया था मैंने ये? 19th June, 19th June, I don't know. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सेकेंड मंथ में गया था। कितना टाइम हो रहा है? 10 o'clock हो गया। हाउ many hours I've been doing this stream? Okay, 1 hour 42 minutes, okay। चलिए फिर से लीड कोड इंटरव्यू असिस्मेंट। रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 different symbols. I didn't make any notes for DSA. That's the reason I'm struggling again. Like
I think I have solved this question as well, but I don't remember it. How did I do that? I think I used an object to store all these mappings and I've used it, I guess. Ah, bro, this is fucked up question, bro. Like, you have to बस इतना ही नहीं स्टोर करना और भी स्टोर करना पड़ता है. मेरे को लगता है 50 मिनट्स इसको करने में लगेगा मेरे को. Since the Roman numerals are represented by the seven different symbols I, V, X, I, V, X, C, D, M, and for example, 2 is written as 2 in Roman numerals, and just two ones added together and 12. Two ones added together 12 is written as X2, which is simplified as X plus 2. No, I never made a notes, man. Like, I don't know. Double X plus, okay, 27, fine. With the for loop, maybe like if we are having any value which is going to be like either it can be 1, 5, or like, I mean, it can't go below 1, I guess. How are they doing for the 1994? 1994, 1000. Damn, bro. This question is going to cook me. Let us create the mapping first. Hmm. Oh, I have to return a number. Okay. How do you do this? Like, if we have three ones,
which is going to be less than my re. Oh, okay, okay, okay. Will it work like this? Nah, bro. I need to look for every characters then, like every time. Maybe like this. I don't see any other options of doing this shit. बट मैं मैपिंग यूज कर रखा, मैपिंग क्या काम पाएगा फिर? आई थिंक लास्ट वाला फेल हो जाएगा। ये वाला फेल होगा आई गेस। क्यों प्यार करेगा तुझसे? एम कहाँ पर डाल दिया मैंने? ओह वाह। 1000 ऐड करेंगे ना तो कुछ अजीब ही आंसर आने वाले आई गेस। आई न्यू दिस शिट ब्रो, इसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। यही एक एज केस है इसमें जिसमें अपने को देखना पड़ेगा कि कैसे इसको निकालेगा। 1000 है। 1000 में और कितना बाकी है?
अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2216 आता है क्या? ये बस एक ही बार 100 कर रहा है गैस। देन वापस इसने 1000 ऐड कर दिया, since they're going to be ये। so जो पहले आ रहा है उसका ही करना है, फिर उसके बाद में जो आ रहा है उसको माइनस करना है। Think there are some exceptional cases for if CM consistent closer then you need to do, and X C करेगा तो and INV रहेगा तो भी। इसका हैंडल करते रुक जा। अगर ये सबसे बड़ा है तो नॉर्मली 1000 लेंगे। अगर मेरा सी एम से छोटा है तो आई थिंक वी नीड टू सब्ट्रैक्ट आई गेस। एंड एक्स एक्स मेरा 10 था शायद, एंड 100 सी 100 आई गेस। तो माइनस होगा ये, विच इज गोइंग टू बी 90 अगेन, लाइक यहाँ पे 1 इज स्मॉलर देन माई 5 रही, तो माइनस होगा। तो अपने को इसको भी हैंडल करना है, ये गलत है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। If my string, I think we need to take care of 3 characters, I guess. 2 characters first. तो करंट रहेगा s of I, and let next will be like s of I plus 1। अब चेक करना है यही कंडीशन, बट थोड़ा अलग करनी है। If my uh, s of I, sorry, current equals to m, and थोड़ी करनी है, या and अगर स्टार्टिंग लेटर फर्स्ट वाला रहेगा तो चलेगा, बट सेकंड लेटर से स्टार्ट करने के, फर्स्ट लेटर जो भी रहेगा उसके साथ हो जाएगा। बट उससे बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा नहीं है तो माइनस करना ही पड़ेगा बस। अगर मान ले यहाँ पे भी एम रहता है, एम एम रहता तो आई थिंक, व्हाट इफ इट इज इक्वल, देन शुड बी कंसीडर, और लाइक विल इट बी लाइक 0?
यहाँ पे हम अपने को बस चेक करना है कि मिनिमम वाला है आगे में एंड मैक्सिमम वाला पीछे में। उसके बाद में अगर मैक्सिमम वाला है तभी we have to remove it. What if they're equal then? If they're equal then we have to add, I guess. So if current is yeah, current is M and next one is also M, then just keep continue count plus plus हो जाएगा। अगर मेरा करंट P है एंड नेक्स्ट इज M, तो छोटा है भाई ये। तो क्या होगा कि काउंट में आ, इसका इसका माइनस करनी है तो M विल बी लाइक 1000, राइट? 1000 में 100 माइनस करेंगे 900 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है ये। एंड x is also smaller than my C which is going to be 100। क्या तुम 100 और इसको माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 90 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 1 भी छोटा है भाई, B से 1 भी छोटा है। अगर करंट वाला से छोटा, करंट वाला से नेक्स्ट वाला छोटा है तो फिर, अगर बड़ा है तो फिर माइनस करनी है, वरना फिर प्लस करते जानी है। Let us book this thing right now. Since you have understood, like, मैं क्या प्लान बनाया था नेक्स्ट में? क्या चालू हुआ? Yeah, now I can use the map here. ये काम करेगा? I feel like the way I'm accessing it is wrong, I guess. Unexpected input हुआ? Like where? Oh, इसका एक मिस हो रहा है। और it should be like this, I guess. Map is not a function। ऐसे से एक्सेस करते हैं। Oh my god, we're getting the. It should be like this, bro. Like inside my map, I'm trying to access the current value. Next value. What the fuck is wrong here?
कैसे भाई? इंटरेस्ट स्टेट ब्रो। मैथ में तो ऐसे एक्सेस करते हैं और क्या एक्सेस करते हैं? But this is the right way of accessing the value, right? What is the issue here? Maybe the next is not present for the, तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँ तो हो जाएगा ना? एंड कर देंगे तो फिर नेक्स्ट रहेगा तभी होगा। ओ इट शुड बी कर। छोटा है तो इसको माइनस कर दो, फिर प्लस कर दो। आई थिंक वी आर गुड टू गो आई गेस। लाइक नेक्स्ट यहाँ पे है। और कैसे एक्सेस करते हैं भाई? सीधा एक्सेस करते हैं। तो क्यों बताना? वही तो होता है भाई। छूटे आ गया। मैप ऑफ करंट, अरे मैप ऑफ करंट ही तो था। ओ। 1994, oh my god, we're getting 1000, which is pretty wrong right now. कहाँ पे गड़बड़ हो गई यार? मैप ऑफ करंट इज लेस देन मैप ऑफ करंट से कम हुआ तो फिर करंट में माइनस करेंगे और ना फिर ऐड करेंगे। then what the fuck is wrong? I can't understand like। एज और लेंथ तक जा रहे हैं, फिर अपना करंट है नेक्स्ट जब तक है तब तक जाएगा। मैप ऑफ करंट इज लेस देन मैप ऑफ नेक्स्ट। काउंट में माइनस करेंगे मैप ऑफ करंट को वरना फिर मैप में ऐड करेंगे। Oh, I'm trying to return my count inside my loop itself. ये ब्रो, रोमन वाला बहुत हार्ड है भाई। रोमन वाला में यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो इंटीजर था गेस। इसका ही उल्टा क्वेश्चन आता है उसमें, इसको देख के इसको करने के लिए बोलता है। वो वाला हार्ड होता है, बहुत हार्ड है भाई। हाउ डू आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट्स नॉट मूविंग। Here given a non-empty, non-negative and reverse stored in reverse, each node contains add two number and return the sum of linked list. Add two number. Oh, you want me to add what? अच्छा, इसका इसके साथ ऐड करनी है। एम ब्रो। ये क्या है? ऐड करके रिवर्स करनी है। हाँ, लिंक लिस्ट।
मैं इसको मैं इसको आराम से अरे बना के कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू लाइक दैट। मेरे को इसका इटरेट करनी है। इसका क्या क्या होता है, नेक्स्ट होता है, null होता है। जब तक मेरा दोनों नेक्स्ट है तब तक वाइल लूप चलेगा, फिर उसके बाद में हम लोग आइटरेट करके हेड वैल्यू निकालते हैं शायद इसमें इंग्लिश में। ये क्या गाना चल गया भाई। हम्म, ये कुछ अजीब लग रहा है, क्या है, 999999। हाँ करूँगा भाई, होगा हाँ। पीछे ही नहीं जाने दे रहा है ये, पीछे ही नहीं जाने दे रहा है, बाद में खाऊंगा। ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट में से निकाल के, यहाँ पे अगर प्रीवियस वैल्यू अगर बड़ा है उससे तो फिर माइनस कर दो, वरना फिर ऐड करते करते चला जाओ, सिंपल। इसका तो टाइम लगेगा सिंस लिंक लिस्ट कैसे करते थे, लिंक लिस्ट में L1 का नेक्स्ट है, कल लिख ही लेते हैं डायरेक्टली आंसर। मेरे को लिस्ट नोट बनाना पड़ेगा, इसलिए लिस्ट नोट बनाने के लिए कैसे करेंगे, लेट L1 नोड। L1 डॉट हेड आता है क्या? मेरे को याद ही नहीं यार, मेथड कैसे होता है। ये सब रिवर्स करना चाहता, मेरे को याद ही नहीं है सब मेथड। मेरे को हेड होता है या फिर L2 L1 ऐसे ही निकाल लेते हैं। जब तक ये है तब तक इट शुड बी नेक्स्ट, नॉट इक्वल इक्वल टू नल, तब तक है तब तक जाएगा ये। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यार, अगर हम लोग डायरेक्टली अरे बना के करेंगे तो कैरी सब कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खराब होता है। आउटपुट विल बी माई दिस थिंग लिस्ट नोड, वहां पे लिस्ट नोड के अंदर में हम लोग अ, कैसे डालते हैं, लिस्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू वैल्यू। Until this is true, then we have to iterate on each thing and take the value, right? So it should be like, I need to add this to the L1 का वैल्यू के साथ L2 का ऐड करनी है, तो let will be, पहले वैल्यू निकालते हैं। जब सम हो जाएगा उसके बाद में हम लोग उसका निकाले। सम हो गया, इसके बाद अपने को L1 को मूव करना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट पे मूव कर जाए। कैसे करते हैं यार, L1 इक्वल्स टू L1 इक्वल्स L1 डॉट नेक्स्ट वन, अरे मूव ऐसे ही मूव करते हैं ना। ठीक है, काम करना चाहिए।
ये नहीं चाहिए सिंस वी आर गोइंग टू रिटर्न एन अरे दिस नोट रिटर्न कर रहा है ये क्या से ये क्या हो इसको कैसे बनाते हैं न्यू दिस कुछ तो हम निकलने के बाद में इसको पुश करनी है उसके अंदर में विच इज गोइंग टू बी लाइक देने से अच्छा कुछ और देते हैं आउटलेस क्या दे हैं ओपीटीलेस ओपीटीएल डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सम OPTL will move to the next index. It should be OPTL dot in. और मेरे को याद ही नहीं आ रहा मेथड वगैरह यार ट्राई करते हैं देयर इज सम इश्यूज लाइक मैंने 3 डाल दिए हैं 2 डालने थे फिर से वही इशू एक पॉइंट पे जाने के बाद एम्प्टी हो जाएगा ये लिस्ट नोट इज नॉट डिफाइंड वाओ यहाँ तो है यार निकाल देना पड़ेगा OPTL equals list new list not what the fuck is this wrong way of doing OPTL is going to be the name of that thing 00 doesn't लिस्ट नोड इज नॉट अच्छा लिस्ट नोड है लिस्ट नोड नहीं है ओ ये बिना अनकमेंट के ये काम करेगा सिंस उधर अंदर दिया हुआ है can't read the property of next I think it should be I think it should be directly L1 and L2 instead of head मेरे को याद ही नहीं आ रहा अप्रोच क्या था there we go man they can't set they can't set the property of undefined okay there we go man PTL में next के अंदर में क्यों डाल रहे हैं and go into the next index को नहीं याद है यार ये कैसे करते हैं ये लिस्ट नोड के अंदर में नेक्स्ट के अंदर वैल्यू डालना होता है वही तो हुआ है नेक्स्ट अलग अलग ही इंडेक्स पे वो टारगेट करेगा एंड ओपीटीएल एरर क्यों मार रहा है ओपीटीएल डॉट वैल्यू करना पड़ेगा क्या ओपीटीएल डॉट वैल्यू हाँ ना ये काम भी नहीं कर रहा मेरे को आइडिया नहीं है भाई क्या करें अभी अरे आराम से कर सकते हैं बट लिंक लिस्ट से करने का है L1 L2 यहाँ पे ले ले बराबर है गेस 100% श्योर
तो लिस्ट नोड अंदर में बनाना है, बाहर में बनानी है? सम भी जीरो, ये भी बराबर है। जो L1 का वैल्यू आएगा, वो L1 इधर आएगा, L2 का वैल्यू जाएगा इधर आएगा, बराबर है भी। मेरे को लगता है इसी में गड़बड़ हो रहा है कुछ तो। इतना ऑपरेशन करने के बाद में मूव करने, या फिर मतलब यहाँ पे सम होने के बाद में मूव कर दी? आई गेस बोथ आर सेम आई गेस। पहले इसको स्टोर करो फिर मूव करेंगे। optl dot value equal to sum, what is wrong here? It says, should I check for optl not or null? I think this is output is not optl sir. I don't even remember the place. We're getting zero. Wow, this is expected. Since यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, I guess. फिर next नहीं आया। से किया था भाई, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है मेरे को। लिंक लिस्ट का थोड़ा याद आ जाएगा तो ठीक रहेगा। लिंक लिस्ट में वैल्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, एंड फिर हेड और नोड ऐसा कुछ एक्सेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब जो होता है ऑपरेशन होते हैं नॉर्मली हम कर सकते, उससे इतना साउंड रखा है मैंने। L2 वैल्यू इसका तो इशू नहीं है ना, L2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करेंगे तो इट विल स्किप द करंट इंडेक्स, उसका तो जरूरत है ही नहीं। Until my current and current dot next exists, then like should I do like that? You're asking the wrong guy. You should ask someone who is good. I'm not good. So we need a dummy node, right? हमारा थोड़ा बहुत तो dummy store करेंगे, and current dot next will exist, but my current will not even have the value. And this is wrong. Like, you're asking really the wrong guy, man. I'm 100% sure. You should ask someone who's good. I'm not the one. PTL तो नहीं है अपने पास। Oh, bro, what the fuck, bro? I had worked for an year in a startup, so I know a bit. I- I'm not even pro, man. Like,
Current and dummy node have created that thing. Like this node zero. Avoid extra. Yeah, I have done that. Just adding the number on the paper from left to right. Need a fucking carrier. I don't know how do you handle the carry? Oh, you want me to create a carry? What do you like first? I can't directly suggest you since I'm not so good with that. But I can tell like if you practice a lot, uh, you can get better. Do you understand Hindi? If you can understand Hindi, then you can search for chai code on YouTube. You can learn from there. And otherwise, if you want in English, then you can look for Sangam. There's a guy called as Sangam Mukherjee. He's a good teacher. I understand Hindi, okay? Then you can look for the chai code resource. There is two playlists for that. You can learn from there. From here, I have learned that. यहाँ पे तेरे को दो प्लेलिस्ट मिलेगा लाइक एक कहाँ है भाई एक बैक एंड होगा एंड एक फ्रंट एंड होगा कहीं पे तो यहाँ पे फ्रंट एंड है यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट है सारे हैं भाई तेरे जो जो पढ़ना पड़ ले तीन लाइन में तीन है ना ये तीनों कर लेगा तू मतलब जान जाएगा जितना चाहिए अगर तेरे को और एडवांस पढ़नी है तो फिर से क्या देख रहा है स्पेलिंग है भाई तेरा इनका देख सकता है इन्होंने सारे पढ़ा रखे रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट चाहे तो टाइपस्क्रिप्ट है जावा चाहे तो जावा है रिएक्ट है एंड फिर एंड बैकएंड में बहुत सारा है अभी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं हुआ बट तू वीडियो में जाएगा तो यू कैन फाइंड नहीं ब्रो डूइंग ब्रो यहाँ पे जाएगा नोट जेएस का तेरे को मिल जाएगा टाइपस्क्रिप्ट का एडवांस टाइपस्क्रिप्ट बहुत सारा आने वाले हैं आई थिंक नेक्स्ट मंथ में आ जाएंगे शायद सो यू कैन चेक दिस चैनल एंड और भी चाहिए तो फिर ये चेक कर सकता है ये बंदा भी गोटेड है मतलब इनका भी प्लेलिस्ट है तू देख जो तेरे को मतलब आसान लग रहा है उसमें से लर्न करना अगर तेरे को पूरा ही मतलब इंग्लिश में ही चाहिए लाइक कंप्लीटली देन यू कैन पता नहीं यार क्या नाम था उसका मेरे को याद ही नहीं बंदा का नाम याद नहीं आ रहा बट he is also goated person like he creates something from completely from scratch क्या नाम था यार उसका ये है इनका देख सकता है इनका भी अच्छा है ये बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर कर रखे हैं तो एक दो भी प्रोजेक्ट कर लेगा ना इसमें से मतलब सब 8 घंटा 9 घंटे के ऊपर में ही है तेरे कम से कम एक दो महीने लगेंगे करने के लिए रिच गाय शेयर कर देता हूँ भाई ले भाई
जो तेरे को अच्छा लग रहा है उनसे पढ़ लेना। अगर तेरे को कंप्लीटली इंग्लिश में चाहिए तो फिर भेजा क्या मैंने एंटोनियो वाला, हाँ ये वाला देखना। सबसे गोटेड बंदा एक है, सबसे ज्यादा गोटेड बंदा एक है जो मतलब भाई अलग ही लेवल का, मतलब फुल स्टैक डेवलपर है वो। मेरे को उसका चैनल का नाम याद नहीं है। मेरे को रैंडमली मिले थे वो। सर्च करके देखता हूँ, अगर मिला तो भेजता हूँ। तो नहीं है जावा से मास्टरी नाम है। ही इज फकिंग गोटेड भाई। वो ऐसे ऐसे चीजें बनाता है भाई, क्या ही बोले, मतलब कोई सोचेगा भी नहीं कि बना सकते हैं। बट उसका चैनल उतना बड़ा नहीं है शायद, बट ही स्टिल गोटेड है। मैं जितने सारे वीडियोस है उसमें से मतलब आधा तक देख चुका हूँ शायद, जो यहाँ तक देखा मैंने। तो बंदा मिल ही नहीं रहा यार, मस्त बंदा है यार। तो वेयर इज दिस गाय ब्रो? आई थिंक सब्सक्राइबर में होंगे शायद। कैन फाइंड हिम? सूडो खुल गया लॉल। ब्रो कोड विद मिक्स, नहीं 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 नहीं। अह, हाँ अक्षय सैनी से तू जावा स्क्रिप्ट सीख सकता है। भाई यार बंदे का नाम ही मेरे याद है यार, देखूंगा तो भी समझ में आएगा। रिस्क तो ये तो गेम के लिए, ये भी गेम है। बहुत लोग को मतलब सब्सक्राइब कर रखा है। अगर तेरे को गोलंग वगैरह सीखना है ना तो फिर ये बनना चाहिए, सीनियसली करके एक है, सबसे बेस्ट। ब्रो वो बंदा मिल ही नहीं रहा भाई। आई थिंक एनाटोनी के साथ मैं ढूंढूंगा तो आई थिंक आई कैन फाइंड। द guy's name? Like, he's little fucking rooted guy. हिस्ट्री में दिखेगा क्या? हिस्ट्री नहीं जानना है, कुछ और आ गया तो वैसे यूट्यूब में कुछ आता नहीं है स्टिल। आई डोंट ट्रस्ट। कैन वी फिल्टर अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर वन? वी डोंट हैव एनी पॉपुलरिटी। अगर HTML CSS वगैरह सीखना तो फिर ये बंदा सबसे बेस्ट है भाई। चल है कि चला गया? आई एम जॉबलेस। आई एम करंटली डूइंग माय PG। इज इट गाय? व्हाट द फक भाई। गोटेड बंदा यार, गोटेड बंदा मिलता ही नहीं है, तुरंत मिलता ही नहीं है। अलग ही बनता है हम लोग। अगर तेरे पास बहुत टाइम हो तो फिर दे सकता है तू लर्न करने के लिए, उससे बहुत अच्छा बंदा है। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी देन यू कैन परचेस हिज कोर्स एज वेल। इतने सारे कोर्स देख रहे हैं भाई, क्या ही। हैरी भाई इज लाइक ऑन टॉप मैन, लाइक हैरी भाई हर जगह। हैरी भाई बोलते हैं, गब्बर सिंह वाला वीडियो देखा क्या तू?
इज इट बैड? मिल क्यों नहीं रहा वो? मैंने तो सब्सक्राइब भी कर रखा था, मेरे को मिल नहीं रहा। ये तो नहीं है। चेहरा तो उसका याद है मेरे को, देखूंगा समझ जाऊंगा, बट उसका दिख ही नहीं रहा उसका वीडियो। रेड स्टार्ट तो नहीं, ये भी नहीं है, बट ही इज आल्सो गुड एट भाई। तो नहीं, एंटोनियो, कोड एंटोनियो भी उसके 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 वीडियो में जाके कमेंट करता है, मतलब इतना खराब बंदा है। जो स्ट्राइक, हाँ। the fuck? ये भी नहीं है। हाँ, इतने सारे लोग मार्केट में आ गया, सब के सब एक ही कर रहे हैं। Idiot, not idiot. मैंने एक जगह से नहीं सीखा, मैंने अलग अलग जगह पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो अगर मेरा हिस्ट्री देखेगा ना, लाइक कम्प्लीटली कितने सारे देख रखे हैं। ये भी नहीं है कहाँ यार? What the fuck? क्या हो गया? यार आ क्यों नहीं रहा है? अच्छा बंदा है यार। ओ गॉड जी, दिखा दीजिए कहाँ पे है। इतना दूर तो स्क्रॉल करते रहता है। नेक्स्ट जेस पे तो उसने प्रोजेक्ट बना रखे है, उसका आ क्यों नहीं? उसका चैनल डेड हो गया क्या? इंग्लिश डालना पड़ेगा क्या? हिंदी वाले फिल्टर हो जाएंगे। मिलेगा तो बताऊंगा भाई, नहीं मिल रहा है। तो सर्च करके देखना, तेरे को पता चलता है, 11-12 घंटा का वीडियो होता है। इतना नहीं आ रहा है। काम था। लेट्स पुट दी जो स्ट्राइड ना 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 सोनी संघा ना बाइक। ये क्या है यार, 3 ही दे रहा है। भाई नहीं मिल रहा भाई, मिलेगा तब भेजूंगा यार। पता नहीं कहाँ पे है, नहीं रहा। एक सेकंड रुक जा, मैं स्ट्रीम ये करके देता हूँ।
The fuck is my history? से कितना साल का हिस्ट्री सेव रहता है इसमें? हर दिन का सेव होता है क्या? लेटेंट आ गया है। मैंने वो बंदा का वीडियो देख रखा था, उसको देख ही नहीं रहा। मैंने कब देखा, मेरे याद नहीं। अच्छा, अभी देख लिया तो देख ही लेते हैं, मेरे को मिल नहीं रहा ना। अरे नहीं हुआ भाई। प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर रहा हूँ। Mr. Goated guy, where the fuck are you, man? बंदा इतना गोटेड है कि ढूंढना पड़ रहा है। Shit, bro. बहुत बहुत सारे लोग आ गए मतलब मार्केट में आजकल, मतलब हर एक लोग मतलब कोर्स डाल रहे हैं ना। समझ ही नहीं आता किससे क्या पढ़ेंगे। स्क्रॉल करते करते टीएस कोडिंग तक आ गया है। ये वीडियो क्यों नहीं मिल रहा मेरे को? देख रखा है। ऐसा नहीं है, मैं देखा ही नहीं। पिछला मन देखा था कहीं। मैंने तो देखा हूँ नहीं। मैंने ऑलमोस्ट एक मंथ तक स्क्रॉल कर लिया, नहीं था। आई टोल्ड यू आई एम डूइंग एमसीए। अरे यार, इसका टाइम यार फिर से लिखना पड़ेगा। मैंने सबमिट भी नहीं किया। सॉल्व कर रखा है पहले ही। वो क्यों नहीं रहा भाई? एंड करंट डॉट नेक्स्ट है, तब तक करो। करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वेशनल। एंड कैरी नहीं है।
यार मेरे को सम वाला याद नहीं आ रहा मेरे को। तो डिजिट वैल्यू इतना लंबा नहीं। एन एन लिख देते हैं इसमें। ऐसी हमारे बहुत आलसी। वैल्यू मिल गया, सम करेंगे। इफ सम इज ग्रेटर देन 10। वैसे कैरी कब होता है? कैरी अब जब होता है जब हमारा 2 डिजिट आते हैं। 2 डिजिट मतलब 2 डिजिट जब आता है तभी कैरी होता है। इसको कैसे करेंगे? जो सम आएगा उसको डिवाइड करें, डिवाइड करके, फिर डिवाइड करके कैरी में डालना, शायद कैरी में डालेंगे। और फिर इन दी एंड कैरी को मतलब ऐड करनी है शायद। नॉट इन दी एंड मतलब अगले में ही अगर कैरी है तो। कैरी वाला कैसे करते हैं भाई? मुझे कैरी वाला पता है। कैरी हाउ डू वी कैरी? मेरे कैरी का आइडिया नहीं है यार। मेरे को अब क्या पता चल रहा है कि मेरे को उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जिसमें मतलब ऐसे सब लॉजिक लग रहे हैं, कैरी है और कुछ और कुछ, जिसमें अजीब टाइप का लॉजिक लगाना पड़ता है। कैरी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? जो सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे 10 से तो हो जाएगा। तो डॉट में हो जाएगा वो तो। कैसे करते हैं भाई कैरी यार, कैसे करते हैं? मेरे को इतना पता है कैरी कर जाएंगे तो हो जाएगा वो। बट कैरी कैसे करते हैं मेरे को कोई पता नहीं। तो एल1 को यूज़ करनी है। एल1 तो मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं करा। मैं एल1 को क्यों दे रहा हूँ वापस? इस कुछ हिंट दो यार भाई तुम लोग। एल1 एल1 नेक्स्ट इज नॉट। करंट क्यों देख रहा हूँ? करंट मेरा रिजल्ट है। क्या इसको निकाले अभी? अगर नॉट नल है मतलब नॉट नल जब तक है तब तक चलेगा ये तो। फिर अपने को तो टेंशन नहीं लेना है। हर एक हर एक कंडीशन ट्रू नहीं हो सकता है। इधर वो होगा इधर ये होगा। अगर तीनों में से कुछ भी होगा तो रिटर्न होगा। तो सम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? कैरी अपने पास है, कैरी को कैसे करेंगे? कैरी वेरिएबल कैसे यूज करेंगे?
बताओ गाइस। Some 10. I don't think some 10 will make any sense here. सॉल्व कर रखा है यार, मेरे को आइडिया क्यों नहीं आ रहा है इसको देखने के बाद में। मेरे को इतना पता है कि हाँ ये इन दोनों को ऐड करनी है, जो कैरी आएगा उसको डालनी है वहाँ पे। बट वो कैरी कैसे डालने मेरे को याद ही नहीं आ रहा। उसका अलग एक फॉर्मूला जैसा होता है, रिवर्सल जैसे करते हैं वैसे ही कुछ होता है। अगर हम लोग सम में डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो L1 L2 सब आ ही रहा है। अगर यहाँ पे कैरी ऐड कर देंगे तो वापस इसको उसमें भी डालना पड़ेगा ना अपने को, क्या होता है उसमें दिस नोड में। सम को डिवाइड करके देखेंगे, सम को 10 डिवाइडेड करेंगे तो फिर डॉट में आ जाएगा, डॉट में आने के बाद में एक सेकेंड। अगर अगर ये है, अगर मैं इसको ये करूँगा, किया नहीं वन आ रहा है, हाँ वन आना चाहिए, वन क्यों आ रहा है, वन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिवाइड हो गया है। वो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, जो ये जीरो है ना, जीरो हट के पॉइंट आ गया तो मतलब इंटीजर में स्टोर। ये कैरी का क्या हुआ, कैरी जीरो आना चाहिए ना वन तो। अगर मैं इसको वापस ये करूँगा तो जीरो आएगा। Damn। मतलब मतलब इसको करेंगे तो फिर ये डॉट लगा देगा, इसको करेंगे मतलब हटा देगा नंबर पे। हाउ कैन वी डू दिस। अगर ये है तो फिर मेरे को वो करनी है, क्या बोलते हैं उसको, कैरी में क्या किया था, कैरी में डिवाइड करनी है। भी कैरी अपने पास, कैरी में जो वैल्यू आ गया तो उसको उसमें भी डालना पड़ेगा ना, जो वो था, क्या बोलते हैं इसको, ये करंट जो हम लोग ने रिजल्ट बनाया था इसका। करंट में टर्म नहीं आया, अच्छा अच्छा हाँ ये, इसको यहाँ से लेके यहाँ पे यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहे हैं, फिर इसमें हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे डॉट्स वगैरह। करंट डॉट टेक्स्ट के अंदर में कैरी को डाल देते हैं, कैरी बिना टी को डाल दें करंट डॉट टेक्स्ट के अंदर में। एंड अभी वो जो वैल्यू था उसको निकालने के लिए हम लोग ने मॉड्यूलो किया था, मॉड्यूलो 10 करेंगे तो फिर अपने पास लास्ट का जो वैल्यू आएगा 10 कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाला हमें मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं कट कर रहा है। करंट करंट और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट तो मूव कर जाएगा। दिस विल बी करंट, if you do current dot next it will move here, if you do current dot next then it will skip this one and it will move here। अभी वैल्यू सब निकाल लिया हम लोग ने, बट इसको मूव किया ही नहीं तो फिर ये कभी
ये कंडीशन कभी आएगा ही नहीं। फिर हम लोग ये करना पड़ेगा ना, L1 value equals to L1 value dot next, L2 value equals to L2 val dot next. Returning what? Return my dummy में सब स्टोर हो रहा है। करंट में स्टोर करेंगे तो डमी में जाके स्टोर होगा। इसका नहीं हो पाना अभी कर। Bro, what the fuck, bro? कैरी काम करेगा यहाँ पे एंड ये ऐसे हम लोग इसका निकाल लेंगे, फिर इसमें डाल देंगे एंड फिर we'll move the pointer to the next node, so this condition becomes true and जब भी रिटर्न करेंगे जहाँ पे अपना वैल्यू स्टोर होगी। Let's try what we're getting. We're getting something wrong with current is not. क्यों रो रहे हो, क्यों रहे हो? It says can't read the property of undefined how. How the fuck can you say that? L1 का next से निकालना पड़ता है। Oh shit. L1 मेरा नल नहीं होना चाहिए एंड L2 नल नहीं होना चाहिए। अब क्या हो गया, अनडिफाइंड वैल्यू। टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा आई गेस। L1 डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, not equal to null, then you take the L1 dot val, otherwise you are going to take 0. I think this one should work. लिख ही देते हैं, not null, and so you take L2 dot val, otherwise you are going to take 0. What's up Desky? ट्रीट बनता है भाई, ट्रीट। यार अभी भी रो रहा है, क्या तकलीफ है भाई सचिन को? यो व्हाट द फक आई एम डूइंग? मेरे को L1 का वैल्यू को निकालना है। अबे साले तू कब ज्वाइन करेगा, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। मैं छूट है क्या? भाई तू ज्वाइन करेगा 1 साल के बाद, मैं तब तक मैं भाई वेट करूँ है। मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा उस टाइम पे। The same shit goes here, bro. Nah, bro, I will be dead a long time, bro. इतना साल कौन जीते? यही वाला इशू यहीं पर भी आ रहा था, तो चेक कर ले रहे हैं पहले, नल नहीं है तभी मूव करना, वरना मत करना। 800 students, damn bro. Are we good to go? Why the fuck am I getting T and D? Shit. Unexpected TLE. What is wrong? If my L1 is not equals to null and L2 is not equals to null, and my not of carry, no, carry greater than 0 है।
Nah, bro. Yeah, we are getting a zero here. Why we are getting a zero? Is this because of this shit? Nah, bro. Yo, why are we getting a zero here? Can someone tell me why we getting zero? Please, someone tell me why we getting zero appended. Bro, we are getting the answer, but zero is getting appended. Bro. What the fuck? No way. Fire. Is it because of this? If I do this, then will I get something string appended? Yeah. I feel like I'll get a string appended. No, that was not a problem, I guess. Yeah, कहाँ पे issue है भाई? Yo, someone point it out faster, man. कैरी में मैथ और फ्लोर ऑफ निकाल सम डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं ताकि हमारा ये आ जाए कैरी आ जाए एंड फिर क्या नेक्स्ट करंट में नेक्स्ट डाल रहे हैं इस नोड में सम जो है उसका मॉड्यूलो करेंगे ताकि वो मिल जाए फिर नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें इशू कहाँ पर शीट आई अंडरस्टूड ये देख लिस्ट नोड में लिस्ट नोड में पहले क्या था जीरो है उसके बाद क्या आ रहा है इस इन दोनों का सम आ रहा है जो कि कुछ भी आ रहा है मतलब सिक्स आ रहा है सिक्स सिक्स कैसे आएगा सेवन आएगा सेवन आएगा फिर जीरो आएगा फिर एट आएगा ठीक है बट पहले वाला में अपने पास में क्या है पहले वाले में जीरो है अगर डमी रिटर्न करूंगा ना तो पहले वाले नोड से आएगा अगर मैं डमी डॉट नेक्स्ट करूंगा तो उसके अगले वाले नोड पे आएगा तो मतलब अपने पास सम आ जाएगा देन आई थिंक इट शुड इग्नोर द जीरो यस देयर वी गो ब्रो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लग गया रे 70 मिनट्स लगा है 59 मिनट्स का आई थिंक मेरे को 50 मिनट्स लगे उसको करने के लिए मेरे को बस कैरी में इशू हो रहा था कैरी अगर हो जाता तो पहले let us check other solutions of people like are they done with some trick or something सब कैरी वाले कर रहे हैं oh we can directly give carry okay so L1 L2 तूने अलग अलग ले लिया मैंने ऐसे ले लिया फिर यही वाला समझ नहीं आ रहा था कैरी करके याद ही नहीं आ रहा फिर इसमें जाके यहाँ पे डिवाइड किया तो ऊपर में आया एंड मॉड्यूल हो गया तो जीरो आ गया रिवर्स वाला लॉजिक है बस रिवर्स वाला लॉजिक याद भी नहीं आ रहा अभी मॉड्यूलो 10 करेंगे डिवाइडेड बाई 10 नंबर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो नंबर हट जाएगा तो 11:52 हो गया दिस इज फकिंग रियल 11:52 कब हो गया भाई इतना फास्ट कैसे चल रहा है guys please make sure to like and subscribe if you're new to my channel I do bakchodi wow 8 people from where 8 people from 8 people came from recommendation हम लोग ने भी एजी वाला किया है इसने हिंट दिया था मैंने खुद से नहीं किया तो where the fuck is the hint
इसने हिंट दिया था डम्मी हेड बना, इसको ये कर, एंड डम्मी नेक्स्ट को रिटर्न करना एट द एंड। इतना मैं समझ गया था, फिर इसने यहाँ पे ना कैरी कहीं पे तो लिखा था, मैंने इतना नीचे स्क्रॉल भी नहीं किया था। कैरी कहाँ है यार, ये कैरी कहाँ तो देखा। हम अच्छा, मैंने खुद वो सोचा कि हाँ, अगर मेरा 10 ऊपर चला गया तो फिर किस में वैल्यू आगे स्टोर होगा। फिर मेरे को याद आया अच्छा कैरी वाला, बट मेरे को ये वाला मेथड मेरे को याद ही नहीं आ रहा कैसे करना है। सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मसल मेमोरी बनानी है मेरे को। चैतन्य भाई, चैतन्य खत्म। ब्रो नीड हेल्प टू हेल्प get started with the DSA. I don't solve any questions how to improve and when to start DSA pattern. Brother, why every people asking me? If you want, you can ask here. You can go here and ask. Desk की चला गया, pages है. Who is there? Nobody's here. Join here. Don't join here. Like I got my Discord banned. Let me share the Telegram link. Mio has subscribed. Yeah, thank you so much, Mio. Thank you for subscribing, Mio. वैसे इसमें इन्वाइट कैसे करते हैं? Let me share you the link of the Telegram. You can join there. टेलीग्राम नहीं दिख रहा ना? टेलीग्राम नहीं दिखना चाहिए भाई, टेलीग्राम में डेंजर डेंजर चीजें हैं जो कि दिखाने का मन नहीं। 4 लाइन भाई, कैसे भाई 4 लाइन में कैसे कर लेते यार तुम लोग? इतना ही करना था क्या? The fuck, like, what kind of response are you giving, man? Don't be so much. Don't be like that, bro. Just help somebody fast. Oh fuck. अच्छा, मेरे को इतना करने का जरूरत ही नहीं था। Dummy node was not even required. So you just return that shit from there. मतलब तूने किया डमी नोट ना? फिर तो 4 लाइन कैसे बोल सकता है? 4 लाइन तो नहीं है ये, छूते आएगा भाई, ये 4 लाइन कहाँ पे है? भाई इसने, ये सब तो चीटिंग है भाई। इसने एक लाइन में टर्नरी ऑपरेट लगा के सब कर दिया। क्या फाड़ भाई? ओ ये क्या? Created a different method for doing that shit. There is not a 4 line, brother. It's gonna be like more than 10 lines. 12 बजने वाले हैं। चलो थोड़ा देर रश करते हैं। कितना कितना क्वेश्चन? एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन किया है। 3 hours ago, an hour ago, and 6 minutes ago. ये काम नहीं है। 100 days तो पहले से ही था मेरे पे, 50 days। अच्छा, और थोड़ा दिन चला जाएगा तो ब्याज मिल जाएगा क्या? मेरे को हार्ड ही नहीं, मीडियम 98 हुआ है। हार्ड 4 लॉल। इजी मेरे को ज़्यादा करना ही नहीं, इसलिए मैं इजी स्किप कर रहा हूँ ज़्यादा। बट वो क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट में आ जाता है अचानक से बीच में, मैं क्या कर सकता
आज भी इजी वाला है, 2 दिन इजी वाला है, मैंने किया ही नहीं। मेरे को उसका स्ट्रिक बढ़ाने का नहीं, स्ट्रिक बढ़ा के क्या करेंगे, चार। यहाँ पे देखिए, ये भी इजी है, ये वाला भी इजी है, मैंने किया ही नहीं। चला रस्ट करने, नॉट रेस्ट, रस्ट रस्ट, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा भाई, रस्ट को टाइम दिया बहुत दिन। 3 दिन हो गया शायद रस्ट को टाइम दिया। रस्ट बुक होता है यार कुछ। Who already knows few languages. So he is suggesting me to read the official rest book. Fine, fine, sure. चलो थोड़ा सा रस्ट करते हैं भाई, फिर सो जाऊंगा। तो 30 to 40 मिनट्स रस्ट एंड आफ्टर दैट आई विल लर्न में चले। एंड क्या क्या बना रहा था, स्ट्रक्ट बना रहा था, कुछ सा किया था मैंने। अच्छा, ट्रेड एंड ट्रेड वगैरह सीखा था, भी नहीं आया ट्रेड वाला। स्ट्रक्ट तो याद है। मैं फोन में चैट पढ़ लेता हूँ आपको अभी, आई एम गोइंग टू quit the chat here, okay? And I need गाना for this। मैंने गाना बंद कर दिया था, उसके साथ उससे रिसोर्स साफ करने टाइम पे। यार तुम लोग मतलब क्या करिए, यार तुम लोग मतलब लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते भाई। इनम तो आती है, इनम मैच कंट्रोल है ना। मेरे को ना थोड़ी कॉल करते हैं, बोरोइंग में इशू होती है, बोरोइंग एंड ओनरशिप। विल प्ले सम माइनक्राफ्ट एट द एंड इफ पॉसिबल, लाइक आई वाज इनवाइटेड फॉर बस। पैकेज एंड क्रेट्स। After we run the cargo and okay, the package control scope and privacy with the modules with the cheat sheet. Start with the crate and root, create root mod garden. What the fuck is garden? Oh, what the fuck is this? Is this some sort of packages? Okay. तो इसको यूज करने के लिए मेरे को मॉड वगैरह डाला था क्या मैंने? मॉड तो नहीं डाला मैंने, रन डाल दिया डायरेक्टली। Oh yeah, I have a mod. Oh, okay. Now I understand. We define a module with the mod key and followed by the name of the module, front of house. Okay, this all these are some sort of different files. What we need to use, then we have to use this shit called as mod. Okay, brother. Okay, this is for ownership. Scope resolution operator, right? What do you call this in Rust?
Chemical, bro. Rust programming language. So what is this symbol then? Navigating modules. Okay, this is for accessing the libraries and stuffs, I guess. Understood, brother. Building path with the scope with use of use keywords. There's use keywords here. Okay. Oh, this is how we build a path. Every time we wanted to add a wish list, then we had to specify front of house, ho- host, hosting to. Fortunately, there is a way of simplify this process. We need to create the shortcut path with use keywords once. Create front house hosting. We can use async await in Rust. Oh, handle thousands of web requests. Okay. Temple function. They do not run immediately. They are lazy. Await pauses the execution of current async function until future completes without blocking thread. The executor, Tokyo. Are we really going to learn the web development? I want to learn this stuff, so I don't want to go back to the web development. The brain fuck interpreter. The brain fuck has a tape, array, and pointer loops, and it forces you to use vector UI, indexing the nested loop with a match and enum. For the instruction set, Rust skill uses vector, match, and control for Rust. Result time 2 to 3 hours. Interpreter, can I build an interpreter?
Read parsing and real-time execution. Okay. A custom memory arena allocator, no STD unset, allocate. Interested to learn Rust, but this is in Hindi, man. Can I convert this thing into English? Maybe I look for an English tutorial. Alex. I don't want someone who is going to go through the book and just they are going to read that shit. I need something where you can teach them shit. T24. If this guy has a good. Oh, when the fuck did I boss this much? What the fuck? I don't want to build a HTTP server. I just want to learn the syntax first.
Why there is no video on Rust? Literally all dumb people are there. Nobody is teaching anything. We have Travis in India. Can we watch this video? It's 7 years ago. Damn, bro. I think there would be a lot of changes right now in Rust. I can't. We can watch the video, but I don't think it will be useful since there would be a lot of updates right after. So we can watch this. This is going to be in uh, English, I guess. I'm just reading from my phone since I don't have a big screen. You know all this shit, bro. Borrowing thing. I don't know much. Mutability, yeah, I know mutable word, I guess. Memory management. Let's go. He is all rounder. Will I get a copyright if I watch his video on live stream? I guess I don't know. Maybe if he gives me a copyright, then my channel is gone wrong. I think he will give me a copyright. I don't know. If he gives me a copyright, then my channel will die. Bro, 14 hours of the first tutorial. Damn. We must be covering every shit. I think free code camp won't be giving me copyright, I guess. If I have a blur part, then what is the point of showing to the people in there? We have all the methods we need for doing shit in the rest of us. Suppose I need to learn borrowing, ownership, string and string, option, option, which option, I don't know. Method associated functions, trades, I did some trades, but I do. And for the vector, we have used the vector, I guess. Asma also have used. And panic, cargo, create and model we did, and display debug we did, and lifetimes we did, iterators we did, iter,
Yo, bro is looking like a Jesus, man. Bro, looks like Jesus.